Good evening. Welcome. You're watching The Buck Stops Here. I'm Vishnu Shom. On the program, differences between the Congress and the Samajwadi Party intensify. Akhilesh Yadav tells us in an exclusive interview, UP doesn't recognize Jairam Ramesh after the Congress leader said Akhilesh was masterly in his inaction in Muzaffarnagar. Meanwhile, with the second BJP MLA arrested today over the violence in Muzaffarnagar, the BJP says they are being unfairly targeted. They've hit out at the Samajwadi Party for preventing party president Rajnath Singh from visiting Muzaffarnagar. Well, let's quickly move on now to our top story and an exclusive interview to Barkha Dutt. Akhilesh Yadav, in this freewheeling interview on the situation in Muzaffarnagar, says why he believes the BJP is polarizing the situation and just what he thinks of Congress leaders who've been hitting out at him. आप नहीं मानते कि आपकी सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से जजमेंट कॉल्स हो या जिस तरह से आपने कुछ डिसीजंस लिए हो, आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से कोई भी गलती हुई है? देखिए, जो मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा रूप हो गया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने किया, और जिन राजनीतिक दलों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जहां सरकार को फैसला लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए थे, वो उठाए हैं, और कुछ राजनीतिक दल लगातार इस प्रयास में थे कि माहौल उत्तर प्रदेश का खराब हो, कोई घटना ऐसी मिल जाए जिसको कि राजनीतिक कौन सा राजनीतिक दल? आप अब बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी, और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस कोशिश की है, और एक घटना नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में जो घटनाएं हुई उनको राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि उन्होंने आपको फोन करके वार्निंग दी कि मुजफ्फरनगर में इरप्शन हो सकती है कम्युनल वायलेंस की, आपने उन वार्निंग्स को इग्नोर किया। आपने क्या मिसरीड किया सिचुएशन को कि डिलिबरेटली इग्नोर किया? मुझे होम मिनिस्टर उनका फोन आया था और उन्होंने ये कहा कि अभी अभी मीटिंग हुई है पूरे देश की, जहां जहां कम्युनल इंसिडेंट्स या वायलेंस हुआ है उसको लेकर के, और जहां पर यह लगता है कि कम्युनल वायलेंस या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों से मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने बात की, मैंने कहा कि हाँ, हम लोग जानकारी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में इस तरह का हो रहा है, और जो मैंने घटना बताई है आपको, ये पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में हुई, और एक राजनीतिक दल जानबूझ करके कर रहा है। पर उन्होंने आपको स्पेसिफिक वार्निंग दी मुजफ्फरनगर की? स्पेसिफिक वार्निंग नहीं मिली मुजफ्फरनगर की। होम मिनिस्टर से स्पेसिफिक वार्निंग नहीं मिली। ये हुआ कि घटनाएं रोकी जाएं। वो पूरे प्रदेश, देश के जितने भी जगह कम्युनल वायलेंस की घटना हुई है उनको लेकर के जहां पर ज्यादा हो सकती हैं, उन्होंने कहा कि उन मुख्यमंत्रियों से वो बात कर रहे हैं। जयराम रमेश आज आप ही के शहर में है, वो आके बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट, ही शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। वो अखबारों में इंटरव्यू देते हैं कि भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विद अखिलेश यादव, ही हैज शोन नो कंपैशन। उन्होंने ये एक फ्रेज यूज किया है, द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट, ही शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। ये तो आपके एलाय है। मैं इनके बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, जिस विभाग के ये मंत्री हैं उस विभाग को लेकर के उत्तर प्रदेश में कई बार आए भी हैं, और कई बार इन्होंने कहा सहयोग भी देंगे, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे नेता के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। आप इस नेता के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, या कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे? मैं ऐसे नेता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन्हें पहचानता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जयराम रमेश को नहीं जानते, पहचानता नहीं। जयराम रमेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को सीरियसली नहीं ले सकता। वो उनके अपने ख्याल हैं। अगर कल इसी तरह का बयान राहुल गांधी से आ गया तो फिर क्या बोलेंगे आप? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता। Okay, lots of critical points mentioned there by Akhilesh Yadav. We are going to be debating this soon, but on the ground in UP, a second BJP MLA and a BSP MLA have been arrested for their role in spreading inflammatory messages which triggered the violence in Muzaffarnagar. Akhilesh Yadav has promised action against any of his own leaders who may have somehow been involved, but the BJP wants to know why hasn't there been any action against these Samajwadi Party leaders so far. BJP MLA Sangeet Som and BSP MLA Noor Salim Rana in the police net for their alleged involvement in Muzaffarnagar riots, a day after another BJP MLA, Suresh Rana, was arrested. But more than the arrests, what grabbed attention was the fact that both politicians seem to have been given preferential treatment by the police. BJP MLA Sangeet Som's arrest followed his surrender at his constituency in Meerut, a surrender that was carefully orchestrated as a 2-hour road show and media spectacle.
Both he and Noor Salim came to court in luxury cars instead of police jeeps, even after being in police custody. Som came in his own Fortuner and Salim on a BMW. सर, जैसे उमा भारती जी ने बोला कि अगर बीजेपी एमएलए के अरेस्ट हो तो शायद कोई रिएक्शन हो सकता है लोगों से, आप भी वही मानते हैं? देखिए, लोगों का रिएक्शन तो हो ही सकता है। ये तो सरकार को देखना है कि वो समानता की कार्रवाई करे। अगर सरकार समानता की कार्रवाई करेगी, अगर आज मेरी गिरफ्तारी कर रही है तो उन्हें आजम खान की भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। Som had challenged the police to arrest him after being charged with fraud for uploading a fake video of Jat boys being killed on his social media page and for making a hate speech at the Mahapanchayat held in Muzaffarnagar on the 7th of September, which led to the clashes. Noor Salim Rana, brother of BSP MP Qadir Rana, was present in this meeting, which took place on 30th August, violating Section 144, which had been imposed in the area. हमारी 24 तारीख की समय हो गई है और 24 में हमारी बेल हो जाएगी। But as police start picking up politicians one by one man remains underground even after 2 weeks of making the first hate speech in the trouble-torn district. BSP's Qadir Rana. The Chief Minister, who has been criticised for a one-sided probe so far, also promised action against one of his own party members, Rashid Siddiqui, and district officials who were on stage at the banned meeting of 30th August. मैं एक भरोसा दिला सकता हूं, कोई किसी राजनीतिक दल से बना रहे, मेरी पार्टी से भी क्यों ना कोई हो, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी। तो आप मान रहे हैं कि जिला अधिकारी और पुलिस का स्टेज पे रहना गलती थी? धारा 144 लागू हो, उस समय अगर सभा हो जाए, इसीलिए कार्रवाई हुई है। वहां के पुलिस के कप्तान के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की। मुजफ्फरनगर के बाद मैं नहीं मानता हूं कि हम इस मुख्यमंत्री को गंभीरता से ले सकते हैं। मैं ऐसे नेता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन्हें पहचानता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जयराम रमेश को नहीं जानते? पहचानता नहीं। All the politicians arrested so far have been sent to judicial custody. There is an uneasy calm over Muzaffarnagar, but law and order officials are on standby, hoping that it's not shattered by the series of political arrests. With camera person Arif Hussain Radhu in Muzaffarnagar and Anand Zanane in Lucknow, Tanima Biswas for NDTV. Well, lots of critical points mentioned in Barkhadat's interview. You saw just a little while earlier on an interview with Akhilesh Yadav. Let's pick up on some of the important themes. Joining me, Madhukar Jaitley, advisor to the Samajwadi Party government in Uttar Pradesh, Captain Abhimanyu, BJP national spokesperson, and Randeep Singh Surjewala, national spokesperson of the Congress. Mr. Jaitley, let me come to you first. You were telling me earlier on that thousands of people who are in the camps following the violence in Muzaffarnagar are now in the process of actually returning to their homes. Why do you believe that the entry of senior BJP leaders in the Muzaffarnagar area is actually going to prevent people from going back to their homes? You see, since the 7th or 8th of September, since the last violence took place, entire area has been completely peaceful. There has been complete law and order maintained in the area. District administration has done a commendable job. It has provided relief to all the people that are there in the camps. All compensations have been paid of material properties. No, but you are worried about BJP leaders going there and you believe that their presence over there is going to reverse this process. It is actually beyond doubt now. You see, after the emergence of the evidence that has been produced in the court and on the basis of which the courts have issued the warrants against the elected members of the BJP and the BSP, who have, after taking the oath of Constitution of India, indulged in such kind of hate speech, which was actually not the forum of those political parties. There were Samajwadi Party leaders like Rashid Siddiqui who were also seen in that area. But I have not seen, and neither have you been able to show so far that Rashid Siddiqui has spoken a word which is of hatred.